So in this question number 7, a 60 kilogram man standing on a horizontal conveyor belt. The belt is given an acceleration of 1 meter per second square. The man is stationary with respect to the moving belt. It means the man is also moving with the same acceleration of 1 meter per second square. The net force acting on the man is, right? So which force is acting on the man when it is stationary with respect to belt and moving? So it is the friction force which is acting on the man in forward direction, right? So this is the only force in the horizontal direction acting, and therefore we can say this force equals to mass into acceleration. Mass is 60 and acceleration is 1. Therefore 60 Newton of force is acting on this man, right? And therefore answer is C. In this figure, A1 and A2 are the acceleration of the blocks. When nothing is given, it means they are given with respect to ground. And pulley is going up with acceleration capital A, right? Then which of the following is the relation between capital A, A1 and A2? Okay. So in such cases, first assume that the lift is going up, lift is stationary, and with respect to pulley, the block 1 has acceleration upward A and block 2 has acceleration downward A, right? A is the acceleration of blocks with respect to pulley. As we know that when pulley is stationary, the both block have same magnitude of acceleration and directions are opposite, right? Now because the pulley is going upward with acceleration A, so both block has upward acceleration also A because of the pulley going up, right? Now what is the net acceleration? We will see the block 1 has net acceleration of A1, which will be the sum of small a plus capital A, sum of capital A and small a. Likewise, on block 2, arrow of A2 is given downward, right? So we'll take A as greater and capital A as smaller, and the net acceleration of block 2 downward is A minus capital A. Now from this we have to eliminate this small a to get the relation. So what we can do, we can directly subtract them, right? So when we subtract them, call it equation 1 and equation 2, subtract 1 minus 2, so it will come A1 minus A2 equals to 2A and A equals to A1 minus A2 upon 2. So the answer is C. So in question number 10, what should be the acceleration of waves on left side, that is small a, so that the mass m fall freely? Okay, fall freely. So do we know what is the acceleration of a small mass? Answer is yes, it is falling freely, so its acceleration is g on the downside, right? Now what should be the acceleration so that it will fall freely, right? When it is falling freely, what we will do, this is the contact surface and the acceleration of both wedge and block in perpendicular direction to this will make equal. Why? Because there will be a slight contact between them when it is happening. Okay, so this is A. So what is the component perpendicular to the surface in contact, which is the inclined surface, right? As we know, this angle is theta. So here is the component A sine theta. This is A sine theta. Likewise, take the component of G in perpendicular direction. So we know this angle is theta. So this is G sine G cos theta. And now make them equal. So A sine theta equals to G cos theta. A equals to G cot theta. Cos upon sine will become cot. Answer is C. Now in this given, the sphere is at rest or in equilibrium in the given surfaces A and B, 1 and 2. So question is,
what is the normal reaction of the wall to, right? Now, in this case, we will be using Lami's theorem because there are three forces acting. Which are those? mg downward, there is n2 by the surface 2, and then there is n1 by the surface 1 on the sphere like this. Okay, as I told you, we'll be using Lami's theorem, and for that we need the opposite angles to this, right? Let us say what is the opposite angle of mg. mg का opposite angle क्या होगा? तो वो होगा n1 और n2 के बीच का angle, this one. Okay. Now, as we know that, what is this angle? Because this is 90 degree, so this angle will be 90 minus 37 by 2, because this angle is 37 by 2, right? Same on the other side also, this angle, that is also 90 minus 37 by 2, because both triangles are similar. Now, sum of these two angle, ये जो पूरा angle है, इसका sum जो होगा वो opposite side में आएगा. So let us sum the two angles. So basically we have to multiply 2 by 2. So what is this angle coming? After multiplying by 2, it is coming 180 minus 37 degree. So finally what we got? We got the angle between n1 and n2 as 180 minus 37 degree. Okay. Now again we have to find the angle opposite of n2. If you can see, this is the angle opposite of n2, that is angle between n1 and mg. Okay. Now if I know this angle, let me call it alpha. If I know this angle, I will directly subtract from 180. From this angle 180, if I subtract alpha, I will get this angle, right? So let us do this. For this, what I am doing, I will extend this line, and now this is a vertical line which is mg line. Now we know that this angle is 37 degree. Already we have talked many times about this. If this angle is 37 degree, means this angle is also 37 degree. Alpha is also 37 degree, right? So what is the angle between n1 and mg? This angle will become 180 minus 37 degree. Okay. Now we got the angle opposite to n2 and angle opposite to mg. So we will use Lami's theorem, and according to Lami's theorem, mg upon sine of 180 minus 37 equals to n2 upon sine of 180 minus 37 degree. Now denominator will get cancelled, and so n2 is coming as mg only, right? Answer is D. In this case, the system is in equilibrium and we have to find the compression of the spring. Means we have to find this x, right? So basically we have to balance out all the forces for the equilibrium. So let us see what are the forces acting. There is contact between small m and capital M. So there is a contact force N by small m on capital M. This is due to small m. Likewise, there is a contact force upside N due to capital M on small m, right? Now there is a force balance. So if we take for small m, a force is acting like this, N, right? Take a vertical line. यहाँ पे एक vertical line लेंगे. This angle will become 45. So this angle will also be 45 degree here. So what is the upward component? It will be n by 2, right? N cos 45. And what is acting downside? It is mg. So the equation coming is n by root 2 equals to mg. Equation number 1. Now coming to the triangular vase. This is a triangular vase. Here is n. Again, this angle will be 45 degree. So this is
N by root 2. Now spring is compressed, so spring applying force on the left side, and that is Kx. So straightforward, Kx is coming N upon root 2, and we got it as mg. So x equals to mg upon k, right? So the answer will be D in this case. Now in this question of equilibrium, given is a two small blocks, small m and capital M, right? And we have to find a relation in theta, capital M and small m, right? So first put some name, like here it is 1 and capital M को नाम 2 दे देते हैं. Then there will be tension T1 and T1 here, because they are symmetric, therefore I am taking both tension T1 and T1 same, and T2 over here. Okay. Now if we see what is T1, so at point 1 there is upward force of 2 times T1 upon root 2. This is 45 degrees, so it is the cos component. So, and from the both side it will be 2 times T1 upon root 2. From there, root 2T equals to mg, because small mg is acting downward, so small mg. So T1 equals to आ रहा है mg upon root 2. Right? Now come to capital M. Capital M पे जो force लग रहा है वो सीधा नीचे लग रहा है capital mg. Then there is tension T1, and you know that the resultant will be exactly opposite of T2, right? This is the resultant, right? Now this resultant is making some angle over here which is alpha, but this alpha is 90 minus theta. How? See, how much is this angle? This angle is theta, right? So how much is alpha? Alpha is 90 minus theta. Okay, be careful here. Now we'll be using the concept of angle between the two vectors, that is resultant जो alpha है ना, वो mg जो कि बेस एंगल है और T1 के बीच में रिजल्टेंट जो आ रहा है उसके लिए एंगल है, राइट? एज वी नो दैट इट इज tan अल्फा इक्वल्स टू, ऊपर में T1 होगा, T1 इंटू साइन ऑफ angle between them, and what is the angle between them? It is 45 degree, right? So 45 degree divided by capital mg plus T1 into cos 45. Now tan alpha को क्या लिखोगे आप? 90 minus theta लिखोगे. So tan alpha is your 90 minus theta. And what about T1? It is small mg upon T2, root 2, and there is already sin 45 also, so it will become mg upon 2 whole divided by capital mg plus small mg upon 2. Now this is cot theta. After solving we will get this. Okay, further when you reverse this, tan theta will become 2m plus small m divided by small m, and that is 2 capital M upon small m plus 1. So if we match the options, we get answer A. In this question, a block 100 kg is given, a man of mass 60 kg pulling this block 100 kg by climbing on the rope with an acceleration of 5g by 4 relative to rope. So underline this line, relative to rope. Rope के ऊपर वो 5g by 4 से चल रहा है. Then what is the tension in the rope? So this is the situation. Pulley. This is the block 100 kg, and this is the man who is going up with 5g by 4 on the rope, right? So now understand this. When it is going up, which is 60 kg mass,
Let us take the 100 kg is going up with some acceleration a. So tell me how much, with what acceleration the rope is coming down. The rope is coming down with the same acceleration as of 100 kilogram, right? Now man is going up on it 5g by 4. So what is the net acceleration of man? Okay. Now you can assume, because a is unknown, so you can assume either a is greater than 5 mg by 4 or less than 5 mg by 4, right? Whatever you assume, you have to write the equation accordingly. Let us say a is greater than 5 mg by 4. This is what we have assumed, right? You can assume 5 mg by 4 as greater than a. So accordingly you have to write the equation. Right now I will be writing the equation according to this assumption. Now here is the tension T. T is tension over here, and the forces acting on the block are mg on block and on man also, right? So what is the equation on block? ब्लॉक पे इक्वेशन लिखेंगे हम T minus 1000, this is mg I am writing, equals to mass into acceleration, equation number 1. Now go for this man. So what will you write? Because you have taken downward acceleration, so net acceleration is downward, and that is a minus 5g by 4. So we'll write 600 mg minus t equals to 60 into a minus 5g by 4, equation number 2. Because we have to find tension, so we can solve accordingly, right? Like either you can find first a and then find tension, or you can directly eliminate a to get the tension, right? So as I told you, you will do your solving here. I am solving in my way. So I will add the two first. So on the LHS 400, on the RHS 160A minus 300 G upon 4. So on solving this we get A, and then from equation number 1 we can write T equals to 1000 plus 3500 upon 16, and when you solve this it will come close to 1280 Newton. So answer will be C. Do your calculation in this. So in this question there are two blocks given, 5 kg and 3 kg. The whole lift is moving upward with some acceleration which has to be found. Okay, and it is given that a man inside the elevator accelerate upward with the acceleration of 9g by 32. So from this observer, both will have same acceleration, let's say upside and downside a dash, and this a dash is given 9 upon 32g. Okay, so now what is the acceleration formula? It is a dash equals to m2 minus m1 into g divided by m1 plus m2 when the lift is at rest. That means pulley is at rest. But in this case, because lift is moving upward, so we'll take effective g. How much is effective g? It is g plus a when lift is going up. Now substituting and solving the values, we get the result. What is a dash? It is g by 32, 9 by 32g. Difference of mass is 2, sum of mass is 8 into a plus g. On solving this, you will get g upon 8. Do your solving in this case, you will get g upon 8. In this question, a block is sliding down with constant velocity, right? So when a block is moving down with constant velocity,
it means the friction force is balanced with mg sin theta and therefore mu equals to tan theta आ जाएगा. So coefficient of friction is equals to tan theta. Now when the block is thrown up, this is the next part of the question. When the block is thrown up with speed u, at what distance will it come to rest? So let it say कि x distance पे आकर के ये rest में आता है तो final velocity is 0. In this case, how much is the retardation? So see, g sin theta is acting downside. At the same time, friction is also acting downside, right? So उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए mu cos theta आएगा, cos theta into g आएगा, ठीक है ना? So total downward acceleration is this much, okay? And rest is solving. तो एक तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे म्यू को tan थीटा रख करके. आफ्टर दैट वी गेट इट इज 2g sin theta, right? Now x equals to what? So u square upon 2a, that is u square upon 4g sin theta. I have used the formula v square equals to u square plus 2as, wherein final velocity is 0 placed, right? So the answer is A. Now in this question, there is an inclined plane at angle theta and the roughness is changing as 0.5x, okay? And a block is left to slide down. So where it is left to slide down, we will take x equals to 0, so there is no friction. But as the block is coming down, friction is increasing as x is increasing, right? So initially low friction, so there was acceleration in the block. But when friction is sufficiently high, the block will start stopping now. So in between, there will be a point when the block will have maximum velocity. When will it acquire the maximum velocity? When the acceleration becomes 0. As far as acceleration was there, the block was gaining velocity, but at a time when the acceleration becomes 0, the block will have maximum velocity. So 0 acceleration means what? G sin theta downward should be equals to mu g cos theta upward, right? G cancelled. Sin theta equals to 0.5x into cos theta. So on solving this, we get 2 tan theta. So the answer is A. X equals to 2 tan theta, where the velocity will be maximum when acceleration is 0. In this question, a block is kept on a rough surface जिसका static friction 0.5 दे रखा है and kinetic friction 0.4 दे रखा है. 60 kg mass है and it is being dragged on a rough surface with the force just sufficient to start the motion from rest. So इस point of time पे static friction को overcome कर रहा होगा ये force. So how much is this force F equals to? This force is equals to the maximum static friction जो कि μs into mg से निकलेगा, and this will come 30 Newton after putting 0.5 into 60 into g, right? Now when this force continue to act on this body, because the body is now in motion, which force is acting on opposite direction? It will be kinetic friction, okay? So this is coming 300 Newton, and how much is kinetic friction acting? It is 0.4 into 60 into 10. This is 240 Newton, right? So net force equals to mass into acceleration. So F minus friction force equals to mass into acceleration. Take the difference. 300 minus 240 is 60 equals to 60 into A.
So A is coming 1 meter per second square. A will be the answer to this, because when you take 9.8, it will come 0.98. So in this question, a 2 kg block A and 4 kg block B is given. What should be the minimum force applied so that A starts slipping over B, right? So in such question, first mark the direction of friction acting on this. So on lower block, there will be friction on the left side F2 from the ground, and there will be F1 from 2 kg on 4 kg on the left direction, and on 2 kg the F1 will be on the right side, right? Now when slipping will occur, F1 will be at maximum, and as I always tell you, first calculate the maximum value of both friction. So it will come 0.2 into 2 into 10, which is 4 Newton. Likewise, what is F2 max? So F2 max के लिए total weight जो use करना है, total mass वो 6 किलोग्राम use करना है. So it is 0.4 into 6 into 10, which will give you 24 Newton. Right. Now, when slipping is about to happen, in that case friction force जो 2 kg पे लग रहा होगा वो maximum होगा. So F1 max equals to mass into acceleration on 2 kilogram to slip. So on solving this, we will get 4 equals to 2a. So acceleration is coming 2 meter per second square. Now, whole system is supposed to move with this maximum acceleration under the force this when the block is about to slip. So for the whole system to move with this much acceleration, we'll write the equation F minimum minus F2 equals to mass into acceleration. F minimum minus F2 maximum is how much? That is kinetic friction, that is 24, equals to total mass 6 into 2. On solving this, you are getting 36 Newton. So B is the answer to this question. So in this question, given system and it is kept on a smooth surface. So there is no friction between 2m and the floor. There is friction between small m and 2m block, right? And that is what we have to find out also. What is the minimum coefficient of friction between m and 2m when the system is released, okay? And both are moving together, right? So सबसे पहले decide करो कि कौन किधर जा रहा है. So hanging mass will go down and this system will go on the right direction. Let us call the acceleration A, then horizontal acceleration will be A. String में tension होगा T throughout and the direction of tension is like this. For our convenience we can string में tension होगा T. Also decide the friction, right? What is the friction force acting on the small block, right? So 2m पे friction आएगा left side में and ऊपर में friction आएगा right side में, right? So सबसे पहले हम यहाँ से A निकाल लेते हैं and then we will come to the friction part, okay? Now how to find this A? So if I take, because the whole system is moving with the same acceleration, so we will take hanging block पे नीचे लग रहा है mg equals to total mass into acceleration. So total mass of this system is how much? It is 4m, है ना? 2m plus m plus m. So this is 4m into A, and therefore acceleration is g upon 4. Now the top block M is having this much force, friction force, which causes it to go with this acceleration g by 4. So you will write the equation F max equals to mass into acceleration, that is this much.
Now friction force is how much? It is mu mg equals to mg by 4. On solving this, mu is coming 1 upon 4. So this is the minimum friction required for the two blocks to move together. Answer is C. So in this question, we have to find the tension in the string. We have to find tension in the string. Now, to find the tension, first thing, if the block is kept without string, will it be slipping down or not? Because there is friction which will come first in upward direction to counter the downside force, that is mg sin theta, and if this friction become insufficient, then only tension will become, right? तो टेंशन तभी आएगा जब फ्रिक्शन यहाँ पे कम पड़ेगा. नाउ म्यू इज गिवन एंड 37 इज गिवन. वी नो दैट कि अगर ब्लॉक को चलना है, tan थीटा पहले पता करो. tan 37 इज हाउ मच? 3/4 means 0.75, and this is smaller than mu because mu is given 0.8, right? So what conclusion do we have? Even if string was not there, the block was not slipping. अगर mu बड़ा हो गया tan theta से, so block do not slip. तो string की तो जरूरत ही नहीं थी. अब string लगा है तो उसमें टेंशन क्या आएगा? 0. So there is no tension in the string. So this is question about the minimum and maximum force on an inclined plane when the friction is present, right? So we know that minimum force to prevent it from slide down is mg into sin theta minus mu cos theta. Sin theta minus mu cos theta. And maximum force in order to push the block upside, ऊपर चलाने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए, इसमें केवल साइन चेंज करना होता है. So this becomes sin theta plus mu cos theta. Now according to question, the double force is required to prevent the block from sliding down, right? जितना ऊपर चलाने के लिए फोर्स चाहिए, the force required to move the body up is double the force required to prevent it. जितना फोर्स नीचे आने से रोकने के लिए चाहिए, उससे डबल फोर्स हमें ऊपर चलाने के लिए चाहिए. So basically according to this question, F minimum अगर F maximum अगर F है, तो फिर F maximum जो होगा वो 2F होगा, डबल होगा मिनिमम फोर्स के, राइट? नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. ओके, तो ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो एंड देन मेक देम इक्वल, राइट? इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको इक्वल कर देंगे, देन सॉल्व. सो ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट tan inverse 3 mu. So the answer is D. So in this question, the curve equation is given y equals to x square upon 20, right? Y means height and x मतलब distance होगा. The maximum height at which the small mass m can be placed on the bowl without slipping, right? Coefficient of friction is given mu. Now say this is the position where you have to put the object so that it should not slip, and this is the maximum height. So at this point you will draw this slope. So उस point का inclination मिलेगा. Now in order to just slip at this point, we have a condition mu equals to tan theta, right? और mu दे रखा है 0.5 equals to tan theta. Now slope को equation से कैसे कनेक्ट करते हैं? तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा. व्हेन यू डिफ्रेंशिएट इट, यू विल गेट dy by dx, जो कि आ रहा है x upon 10, एंड दिस इज नथिंग बट tan थीटा. सो यू विल प्लेस इन प्लेस ऑफ tan थीटा x upon 10, राइट? सो हाउ मच आर वी गेटिंग? x इक्वल्स टू 5. नाउ x इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, राइट? मुझे चाहिए वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस होता है y. तो फ्रॉम हेयर y इक्वल्स टू 5 स्क्वायर अपॉन 20, 25 upon 20. This is 5 upon 4. On solving this, you will get 1.25. So 1.25 meter is the height at which the block is, if kept, it will about to slip. B is the answer.
Now in this question, there are three blocks A, B, C and a force F is applied on it. So we have to find what is this minimum force F to prevent block B to slide down, to slip down, right? क्योंकि block B पे नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो वो नीचे pull करेगा. But given all the surface is smooth except BC, B और C के बीच में जो surface दिख रहा है यहाँ पे friction है, बाकी और कहीं पे friction नहीं है, right? Now this friction will act upward to prevent the block B to go down, right? सो मिनिमम फोर्स अगर बात करेंगे हम, तो उस समय अगर ये प्रिवेंट हो चुका है, देन द होल सिस्टम इज मूविंग विद अ कॉमन एक्सेलरेशन ए, राइट? हाउ मच इज दिस कॉमन एक्सेलरेशन? नेट फोर्स एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज 5m ना, 2m plus 2m plus m, दिस बिकम 5m, राइट? नाउ फ्रिक्शन जो आएगा वो हम कैसे पता करेंगे? तो फ्रिक्शन हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से पता करेंगे ना. So where is the normal contact force? Between block B and C. So B के वजह से C पे लग रहा है normal contact force right direction में, और इतना ही C B पे दे रहा है normal contact force left direction में. तो हम लोग C से N को पता करेंगे, ठीक है? On C, N equals to mass into acceleration, so 2m into A. So this is 2F upon 5, A को रखने के बाद. This is the normal contact force acting between B and C. Now this will lead to the friction force. Now to prevent slipping of B, क्या लिखेंगे आप? आप लिखोगे mg should be less than equals to F max, और ये F max कितना होगा? म्यू n के बराबर, और n कितना होगा तो ऊपर लिख रखा है वो वहाँ से आएगा. सो mg शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2f अपॉन 5 इंटू म्यू. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 mg अपॉन 2 म्यू. सो मिनिमम फोर्स इज 5 mg अपॉन 2 म्यू. B इज द आंसर. इन दिस केस अ चेन ऑफ लेंथ L, a chain of length L is kept on a table, some part hanging so that it is not slipping. So the question is, what is that maximum part which can be hanged without slipping? So हमें basically ये वाला x निकालना है, right? So what are the forces acting to balance it out? So we will divide the chain into two parts. Part 1 which is on the table and part 2 which is hanging down. Part 2 पे जो नीचे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg, और पार्ट 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है फ्रिक्शन. नाउ दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू mg इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस, राइट? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पार्ट विच इज ऑन टेबल? इट इज L minus x. सो इफ यू कंसिडर लैम्डा एज मास पर यूनिट लेंथ, देन यहाँ पे लिखोगे mg, और इस m में लैम्डा इंटू एक्स, दिस इज द मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट, इंटू g लिखेंगे. लाइकवाइज फ्रिक्शन में क्या लिखने वाले हम? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू m1 इंटू जी. हाउ मच इज m1? सो म्यू इंटू लैम्डा इंटू L माइनस एक्स इंटू जी. नाउ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्लिपिंग वी हैव टू मेक देम इक्वल, ठीक है ना? सो F इक्वल्स टू m2g, दैट इज म्यू लैम्डा L माइनस एक्स इंटू जी इक्वल्स टू लैम्डा एक्स इंटू जी. हमें x निकालना है यहाँ से, सो g कैंसिल कर लो और x निकल के आ जाएगा, विच इज कमिंग a, म्यू L अपॉन म्यू प्लस 1. सो इन दिस क्वेश्चन a trolley A attached with a string and B is a hanging mass. If the speed of trolley is constant, underlining this, speed of trolley is constant and speed is VA. So acceleration is 0 for the trolley. VA is 0. The speed and magnitude of acceleration of the block B at the instant shown is. तो हमें क्या निकालना है? VB निकालना है और AB निकालना है. Acceleration of B and velocity of B. सबसे पहले तो TA मेथड लगाएंगे. So B का स्पीड किधर है? राइट डायरेक्शन में. A का B किधर जा रहा है? तो B नीचे जा रहा है, राइट? सो यू विल बी यूजिंग TA मेथड. यहाँ पे T है
और यहाँ पे t है. So for VA, t VA cos theta इक्वल्स टू t इंटू VB. t कैंसिल आउट हो जाएगा तो VA cos थीटा इक्वल्स टू VB. अभी इस इंस्टेंट पे cos थीटा कितना है? तो दिस इज हाइट 4, दिस इज बेस लेंथ 3, सो हाइपोटेनस इज 5. नाउ cos थीटा इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा. सो 3VA अपॉन 5 इज इक्वल्स टू VB. This is the answer C. Okay. Now we have to find acceleration. Now for acceleration you need to differentiate this equation. Okay. And theta is also changing in this case. So we have to use differentiate करेंगे और यहाँ पे product rule use करेंगे. तो VA का acceleration differentiation हो जाएगा AA acceleration into cos theta plus इस वाली cos को differentiate करेंगे तो minus VA sin थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी. ठीक है ना. थीटा का डिफरेंशिएशन जब टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी. ये आएगा. एज पर क्वेश्चन द ए इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन इज 0 एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल्स टू माइनस वी ए साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी. देखो साइन थीटा तो निकल रहा है 4/5 फिगर से ही, लेकिन ये डी थीटा अपॉन डी टी अभी पता नहीं लग रहा है. राइट. सो वी हैव टू लुक फॉर सम अदर वे टू फाइंड दिस डी थीटा अपॉन डी टी टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. सो व्हाट वी विल डू, ये जो x है वो बदल रहा है लेकिन हाइट नहीं बदल रहा है और x के साथ थीटा बदल रहा है. सो व्हाट वुड बी द रिलेशन ऑफ x, h एंड थीटा? दैट रिलेशन शुड बी tan थीटा. राइट. tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन x, मतलब 4/x हो जाएगा. ठीक है. नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट दिस. सो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी. 4 एज इट इज. 1/x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. और ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? दिस इज VA. राइट. यहाँ से हम थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा. बताओ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/cos होता है. cos थीटा फ्रॉम द फिगर इज कमिंग 3/5. इसको उल्टा करोगे 5/3 हो जाएगा. सो दिस इज 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू -4 इंटू 1/x मीन्स 3 स्क्वायर इंटू VA. ये 3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ से तुम्हें मिल रहा है डी थीटा अपॉन डी टी. दैट डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू -4 VA अपॉन 5 का स्क्वायर. नाउ पुट दिस इन द इक्वेशन ऑफ A. AB इक्वल्स टू -VA साइन थीटा के जगह पे आप रखोगे फिगर से 4/5 एंड डी थीटा अपॉन डी टी के जगह पे आप ये वैल्यू रखेंगे -4 VA अपॉन 5 स्क्वायर. राइट. सो 4 इंटू 4 16 हो गया. 16 VA स्क्वायर अपॉन 125. ये है तुम्हारा B का एक्सेलरेशन. आंसर इज D ऑल्सो. सो इन दिस क्वेश्चन फॉर अ पार्टिकल विच इज बाउंसिंग बैक फ्रॉम बैट, ठीक है ना, 200 ग्राम बॉल इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. अ ball strikes with the bat and bounce back on the same line with 40 meter per second. Right. So this is your bat. Ball इसको hit किया 20 meter per second से. Now it return back with 40 meter per second. So यहाँ पे change in momentum and force का relation बनाएंगे हम. ठीक है ना. कितने देर के लिए कांटेक्ट में है? तो 6 मिलीसेकेंड के लिए कांटेक्ट में रहेगा. So the concept that we are using over here is change in momentum equals to force average into time taken. ठीक है. Now how much is the momentum change? The first question is how much is F naught, right? ये F naught कितना है? Now this portion is nothing but area, area of AT curve.
तो मुझे एरिया से मिल जाएगा वो वाला फैक्टर और इधर मोमेंटम का चेंज मिल जाएगा। सी मोमेंटम में होगा मास m इंटू वी टू माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम दोनों वेलोसिटी को सम कर देते हैं। वेक्टरली लिखना है, चलो लिख लेते हैं। दिस इज मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इज 40 माइनस 40i m इंटू माइनस 40i, बीच में माइनस आएगा, एंड माइनस 20 आई इक्वल्स टू एरिया। सो हाफ इंटू एफ नॉट हाइट हो गया, सीधा फिगर, इंटू बेस लेंथ इज 6 मिली सेकेंड, तो 10 टू द पावर माइनस 3। सो नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई इट। 0.2 इंटू माइनस 60, ठीक है। सो अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो माइनस को भी छोड़ दो, ठीक है ना, इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एफ नॉट अपॉन 2। So this is coming 4000, F naught is coming 4000 Newton. So average force acting on the ball during this is 4000 Newton. Maximum force, right? Now what is the average force exerted by the bat on the ball? Now average के लिए क्या करते हैं, average का मतलब होता है इस ड्यूरेशन में constant force का लगना। So let us say that constant force is this one, F average, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे टाइम। तो what you see is an rectangle। अभी इसका एरिया जो ट्राइंगल दे रखा है ना उसके एरिया के बराबर कर देना है। क्यों? बिकॉज बोथ विल गिव यू द सेम इम्पैक्ट, मीन्स चेंज इन मोमेंटम। सो F average इंटू टाइम 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल्स टू टोटल चेंज इन मोमेंटम जो कि 0.2 इंटू 60 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो F एवरेज मिलेगा हमें, दैट इज कमिंग 2000 न्यूटन, राइट। सो B इज द आंसर टू दिस एवरेज फोर्स। ओके, व्हाट इज 83? द स्पीड ऑफ बॉल एट द इंस्टेंट द फोर्स एक्टिंग इज मैक्सिमम। जिस समय फोर्स मैक्सिमम लग रहा था, मतलब F नॉट मीन्स 4 सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, हाउ मच इज द वेलोसिटी। तो इस बार क्या करोगे कि केवल उतनी ही देर का, मीन्स ये वाला ट्राइंगल का एरिया को आप मोमेंटम से इक्वेट करेंगे। हाउ मच इज द वेलोसिटी इनिशियली? इट वाज 20। हाउ मच इज द वेलोसिटी एट 4 मिली सेकेंड? इट इज v, ठीक है। नाउ दोनों टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या लिखने वाले हो, तो मास इंटू 20 प्लस v, राइट, इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सो हाफ, फोर्स ऑलरेडी हमें पता लग चुका है कि ये 4000 है। सो 4000 इंटू 4 सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, तो माइनस 3 लिखेंगे, राइट। सॉल्व दिस। सो ऑन सॉल्विंग दिस you will get v equals to 40 meter per second. Okay, so the answer is A. So in this question, A is 40 kilogram and B is 15 kilogram mass. Okay, and there is a force acting 500 Newton parallel to the surface on a smooth inclined plane, and there is friction between A and B. They are saying that the system is moving together. Why they will move together? Because there will be friction between A and B. Only then they can move together, right? So first part of the question is, what is the acceleration of the system? So here we have to take the complete system moving together. So it is going upside with acceleration A. नीचे क्या लग रहा है? तो नीचे लग रहा है mg sin 30, और m कितना लेना है, तो 40 प्लस 15, that is 55. So 55 into g into sin 30, that is 1/2, right? And upside is the force of 500 Newton. So what we will write here? We will write net force 500 minus 550/2
equals to mass is 55 into A, right? So 1000, so this is coming A equals to 450 divided by 2 into 55. On further solving, we will get 45 upon 11 meter per second square. Check this calculation by yourself. Okay, you have to solve equation 1 to get the result of A. So the answer coming is A. 45 by 11 is the acceleration of the system. Now, so A is moving with acceleration of 45 by 11. Which force is responsible for B to move? Which force is responsible for B to move with this much acceleration? So it is friction only. B और A के बीच में जो friction लग रहा है, that is responsible for block B to move with this acceleration, right? Now the next question is, what is the least coefficient of friction between B and A? So you have to find mu, right, between B and A. Now let us see what forces are acting on B. Focus on B. Downside, it is mg. Upside, perpendicular to the surface, it is n. Friction is acting on the right side due to A on B, and this is the static friction acting, जिसका maximum value लेके solve करेंगे, and it is moving upside, right? So if we want to use pseudo force in this case, तो क्योंकि ऊपर A से चल रहा है, तो with respect to A, the block B is at rest. With respect to A, the block B is at rest. Use a pseudo force MA in opposite of direction of A, that is going upward with this, right? Now the block is in equilibrium, so we can resolve the force in order to make them equal. So I am taking horizontal and vertical axis for the calculation. This angle is 30 degree. Here it will be MA cos 30, and vertical direction में आ जाएगा MA sin 30. Okay, so on y-axis how much is n? So n equals to mg plus MA sin 30, right? Now on x-axis, what is the condition? So f max जो होगा वो MA cos 30 के बराबर हो जाएगा. Now f max कितना लिखना है तुम्हें? तो म्यू n लिखना है, और n के जगह लिखना है mg plus MA sin 30 equals to MA cos 30. From here, mu is coming A cos 30 divided by G plus A sin 30. You will put A equals to 45 by 11 here, and you will go. So when you solve this, you will get 9 root 3 by 53. Do the solving in this case and substitute A equals to 45 by 11. So the answer for question number 87 will be B. Okay. So in this given system, there is M1 1 kilogram, M2 2 kilogram, and M3 3 kilogram. All surface is smooth, right? There is no friction anywhere. So when we leave the system, the blocks will move accordingly. Like M1 will definitely move on the right side. M3 should move down because it is the heaviest one, 3 kilogram, right? So first we have to decide which one is going where. So M3 is coming down, right? We have to find the tension. A2 2 का एक्सेलरेशन बताना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एंड A3 3 का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है. नाउ A3 विल बी कमिंग डाउन, सो A3 यहाँ लिखते हैं, एंड A1 इज द एक्सेलरेशन, एंड M2 का पता नहीं है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सो वी हैव टू टेक वन डायरेक्शन एनीवेयर.
सो आई एम टेकिंग इट अपसाइड, M2 इज गोइंग अपसाइड। ये तीनों A1, A2, A3 जो है ना वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा है मैंने, राइट। नाउ देयर आर टेंशन T, T एंड T। हाउ दिस टेंशन इज एक्टिंग? इट्स एक्टिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले कंस्ट्रेन मोशन से ना हमें A1, A2 एंड A3 में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। सो TA मेथड यूज कर रहे हैं। देखो जरा, T इंटू A1, T इंटू A1, ठीक है ना, जो पुली पे फोर्स लग रहा है वही ब्लॉक M1 पे लग रहा है। सो T इंटू A1 प्लस T इंटू A2, M2 को देखो ऊपर टेंशन है ऊपर ही एक्सलेशन है, माइनस T इंटू A3 minus T into A3 equals to 0. So from here we get A3 equals to A1 plus A2. This is one constrained equation. How many unknowns are there? There are 4 unknowns are there. So we need 4 equations to solve this. तो 3 इक्वेशन तो ब्लॉक से मिल जाएगा, तीनों ब्लॉक से, और एक इक्वेशन ये रहा जो अभी कंस्ट्रेंट से मिला है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशंस ऑन ईच ब्लॉक। M3 पे लिखते हैं, M3 पे नीचे जा रहा है, सो यू विल राइट M3G माइनस T इक्वल्स टू MA। सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, 3G माइनस T इक्वल्स टू 3 इंटू A3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है? तो देर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M1, राइट। M1 पे लेफ्ट साइड में N लग रहा है और M2 पे राइट साइड में N लग रहा है, ओके। नाउ कमिंग टू A2 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 1, तो ऊपर T है नीचे Mg है, सो वी विल राइट, ब्लॉक 2 पे लिख रहे हैं वर्टिकल लाइन पे, M2 पे T माइनस 2G नीचे इक्वल्स टू 2A2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ओके। नाउ ब्लॉक 2 पे ही अभी लिख रहे हैं, ब्लॉक 2 पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में N इक्वल्स टू MA, N इक्वल्स टू 2 इंटू A1, ठीक है ना। व्हाट इज द हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2? इट इज A1, राइट। नाउ कमिंग टू ब्लॉक M1, M1 पे जरा फोर्सेस देखो, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या है, T राइट साइड है, N लेफ्ट साइड है, सो T माइनस N इक्वल्स टू 1 इंटू A1, इक्वेशन नंबर 5। नाउ वी हैव दिस मच ऑफ 5 वेरिएबल, नाउ वी हैव N, T, A1, A2 and A3. We have to simplify all these equations to get the results, right? So let us solve them. So when I put N in equation number 5, we are getting T equals to 3A1, ठीक है, T equals to 3A1, ये एक इक्वेशन हो गया। If you add equation number 2 and 3, 2 plus 3 अगर करोगे तो T कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3G माइनस 2G इक्वल्स टू G आएगा, तो G इक्वल्स टू 3A3 प्लस 2A2 आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो वी कैन स्टैब्लिश वन मोर रिलेशन यूजिंग T इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और 2, लाइक फ्रॉम 2, जरा देखो इक्वेशन 2 को देखो, 3G माइनस 3A1, T के जगह पे मैंने रखा है माइनस 3A1 इक्वल्स टू 3A3, सो G इक्वल्स टू आ रहा है A1 प्लस A3, ठीक है। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 6। वी कांट डू, यहाँ पे तो तुम्हें खुद से ही सॉल्व करना है ये सारा कुछ, ठीक है। इक्वेशंस बना दिया है, अब बाकी सॉल्विंग तुम्हें करना था, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 वी आर पुटिंग A1 हियर,
ठीक है ना, a1 को हम इक्वेशन 1 से पुट कर रहे हैं जो कि a3 माइनस a2 आ रहा है. सो g इक्वल्स टू 2a3 माइनस a2 आ जाएगा. नाउ यू सी इक्वेशन नंबर 7 एंड 9, तो वहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें अगर. व्हाट आई एम डूइंग, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन नंबर 9 एंड देन ऐड विथ 7. तो यहाँ से a2 कैंसिल हो जाएगा और सीधा सीधा मुझे a3 मिलके आ जाएगा. सो 3g इक्वल्स टू, खुद से करेंगे ये सारा कैलकुलेशन, इक्वल्स टू 7a3. सो a3 इज कमिंग एज 3g by 7. Which means 30 by 7. 30 by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ क्योंकि a3 आ चुका है तो कोई भी इक्वेशन लेकर के 9 और 7 यू कैन फाइंड a2. तो फ्रॉम 9 a2 इक्वल्स टू 2a3 माइनस g हो जाएगा. ठीक है, सो 6g अपॉन 7 माइनस g हो जाएगा, विच इज गिविंग यू माइनस g अपॉन 7, मतलब 10 बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन साइड. सो a2 ऊपर नहीं है, एक्चुअली वो नीचे जा रहा है 10 बाई 2 से, राइट. और किसी भी एक इक्वेशन से, लाइक इक्वेशन नंबर 2 से ही आप टेंशन निकाल सकते हो. सो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3g माइनस 3a3 एंड a3 इज 30 बाई 7. पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 90 बाई 7. सो 210 माइनस 90, 210 माइनस 90 अपॉन 7, सो 120 बाई 7 न्यूटन, राइट. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्विंग. 91 का आंसर टेंशन 120 बाई 7 आ जाएगा. ठीक है, 91 का आंसर मतलब m1 का एक्सेलरेशन. ओके, m1 का नहीं निकाला हमने, m2 का निकाला है. ठीक है, एंड m3 का एक्सेलरेशन तो b आ रहा है. ठीक है, व्हाट अबाउट a1, तो दोनों का डिफरेंस होगा. a1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, a3 माइनस a2, राइट. सो 30 माइनस ऑफ माइनस, ये आ जाएगा 40 बाई 7. ठीक है ना, 40 क्यों, क्योंकि a2 जो आ रहा है वो माइनस 10 बाई 7 है. ठीक है, जो डायरेक्शन लिया था उसके हिसाब से माइनस 10 बाई 7 है. सो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 40 बाई 7. सो द आंसर इज A291. ओके.